Hello bachcho, let's read this question. The question says intestine absorb the digested food material. What type of epithelial cells are responsible for that? Option A stratified squamous epithelium, option B columnar epithelium, option C spindle fibers and option D cuboidal epithelium. So key concepts पे बात करते हैं चलो. Columnar epithelium, columnar epithelium forms the lining of columnar epithelium forms the lining of stomach, forms the lining of stomach, small intestine and colon, small intestine and colon, stomach, small intestine and colon, stomach, small intestine, small intestine and colon forming the mucous membrane, forming the forming the mucous membrane, forming the mucous membrane, forming the mucous membrane, forming the mucous membrane. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. देयर मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. Their main function is absorption and secretion. Their main function is their main function is absorption and secretion. Absorption and secretion. Absorption and secretion. So ऑप्शंस को चेक करते हैं. अब चलो ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथीलियम, ये करेक्ट आंसर नहीं है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज it forms the lining of outermost layer of the skin and inner layer of the mouth and inner layer of the mouth. So इसको लिखते हैं चलो. stratified stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium, squamous epithelium, stratified squamous epithelium forms the and epithelium forms the outermost layer of the skin, outermost layer of the skin, outermost layer of the skin and inner layer of mouth and inner layer of and inner layer of and inner layer of mouth and inner layer of mouth. दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं चलो. ऑप्शन बी कॉलमनर एपिथेलियम, यस ये सही है. ऑप्शन सी स्पिंडल फाइबर्स इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज स्पिंडल फाइबर्स कहाँ फाउंड होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर फाउंड इन spindle fibers are spindle fibers are found in spindle fibers spindle fibers are found in found in are found in are found in cytoskeleton, are found in cytoskeleton as well as cilia and flagella, as well as cilia and flagella. So option C is also not correct. ऑप्शन डी क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये भी करेक्ट नहीं है. और ये कहाँ फाउंड होता है इसको भी लिखते हैं चलो. क्यूबॉइडल एपिथीलियम्स आर फाउंड इन क्यूबॉइडल एपिथीलियम आर क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथीलियम आर क्यूबॉइडल एपिथीलियम आर फाउंड इन आर आर फाउंड इन आर फाउंड इन ओवरी are found in ovary, nephrons, nephrons, renal tube and renal tube and renal tubes and renal tubes. So option D cuboidal epithelium is also not correct. So intestine absorb the digested food materials. And what type of epithelial cells are responsible for that? So the final answer of this question is option B columnar epithelium. I hope you understood it well. Best of luck.